Hello everyone. I think you are well and I think you have done well in the Commerce Matrix Olympiad. I'm here to provide you the solution of part 1, that is Journal Commerce Aptitude. Now let's start. Okay, let's start with the first question. What is the main source of income? Here the main focus is on the word source of income. What is the main source of income for banks? Let's go through the different options. Providing locker services, charging customers for ATM usage, interest on loan they provide, selling insurance policies. So out of this, the main source, if we talk about the main source, that is option C, that is interest on loan they provide. Come to the question number 2. In which sector is the production activity? We have to focus on the word sector. In which sector is the production activity based on the transformation of raw material into finished goods? When we have to transfer the raw material into finished goods, then we have to find out which sector is related to that. Primary sector, tertiary sector, secondary sector. Yes, secondary sector is the sector which refers to the transformation of the raw material into finished goods. Primary sectors, it provides the raw material, tertiary, it provides the services. So secondary sector is the right option which transfers the raw material into finished goods. So in case of the question number 2, the right option is C. Yes. Which of the following is a major feature of multinational corporations? Here the focus is on the word major feature. Let's go through the different options. They focus only on selling goods in local markets. They produce goods only in the home country. They operate in multiple countries for production and sale. They are controlled by local governments. So in case we see, the right option is C. That is, the major feature of multinational corporation is that they operate in multiple countries for production and sale. So C is the right option for question number 3. Now move to next question number 4. Yes. SEZs, that is Special Economic Zones, are developed in India mainly to. Why they are developed? They are developed in India mainly to promote regional tourism, encourage foreign and local investment with tax incentives, provide subsidized goods to consumers, restrict import from foreign countries. So we can say the right option is B. So the mainly special economic zones are developed to encourage foreign and local investment with tax incentives. So B is the right option in case of question number 4. Now let's move to the question number 5. Which of the following is an example? Here the focus is on the word example of the right to be informed. So which of the following is an example of right to be informed? So different options are asking for replacement of a defective product, reading details like price, ingredients and expiry date on a particular label, filing a complaint in consumer court, joining a consumer awareness campaign. So here we have to find out which is the best example of right to be informed. So here is reading, because it provides the information that is right to be informed, from where we get the information. Reading details like price, ingredients and expiry date on a particular label. B is the right option for question number 5. Question number 6. Arrange the following steps in order when a consumer faces a problem. So in this question, we have to find out the order when a consumer faces a problem with the purchased product. When he faces a problem, here we have to find out the order. Let's go through the different statements. File a complaint with the consumer forum. Identify the problem and gather necessary documents. We have to contact the seller. Mention the relief. So what should be the first step? First, we have to identify the problem and gather necessary document. So this is the first step. We will identify the problem. Then
We will contact the seller manufacturer for the solution. After the problem, we will contact the seller so that he can give us some solution. Then we have to mention the relief or compensation expected. We have to tell what we expect. That is 4. Then last is, then we file a complaint with the consumer firm. 1. So this is the correct sequence. 2, 3, 4, 1. 2. Yes, A is the right option. So in case of question number 6, the right option is A. Match column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below. Column number 1, GDP. This is GDP. Disguised, unemployment, underemployment, interdependence of sectors. Just go through the column 2. More people are engaged than required. Worker is not fully utilized. Total value of final goods and services produced in a country. All sectors rely on each other. So let's match the column 1 with the column 2. First is GDP, obviously. GDP is total value of final goods and services. So let's write here. So in case of the P, the right option is 3. Then disguised unemployment, that is, it means more people are engaged than required. 1. Underemployed. Worker is not fully utilized despite being employed. That is second. S. Interdependence of sectors. All sectors rely on each other to function. That is 4. So this is the correct match. 3, 1, 2, 4. Yes. Option C. So in case of question number 7, right option is C. Then question number 8. Match column 1 with the column 2 and select the correct answer using the codes. Now column 1, that is, P is formal source of credit, then informal source of credit, then collateral, help, self, groups. Now let's go through the options in case of column 2. Village, money lender, friends, commercial banks, cooperatives, provide small loans and promote saving habits, and asset offer to secure a loan. Now let's match the column 1 with column 2. Formal source of credit. This is the with the go, that is, it's go with the column number 2. Commercial bank, cooperatives, P, Q, R, S. So in case of the P, the option 2 is right. Commercial bank, cooperatives. In case of 2, informal source of credit, it goes with the village, money lenders, friends. It's 1. In case of collateral, an asset offered to secure the loan. It's 4. In case of self-help groups, it helps to provide small loans and promote saving habits. 3. So the right option is 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. So we can say D. So in case of question number 8, right option is D. Next question, question number 9. The question number 9 is a statement-based questions in which 2 statements are given, and you have to identify whether the statement 1 is true or both are true, both are false, or one is true and the other is false. Let's go through. Statement 1. Statement 1. Consumers have the right to seek redressal only when they buy goods from government shop. No, it's not compulsory that they can get redressal only when they buy it from the government shops. No, it's not compulsory. So this is false. Consumer statement 2. Consumer forums have been set up at district, state, national levels to address consumer grievances. Very well right. So this is true. So first is false, statement 1 is false, whereas statement 2 is true. So we can say the option is C. Here the statement 1 is false and statement 2 is true. So in case of question number 9, the right option is C. Again, the statement based question in which 2 statements are given. Globalization has led to increased interlinking of markets across the world. Yes, very right. Because globalization had led to the interlinking of the markets across the world. It's true. Next one.
foreign trade results in isolation of local producer from global market. It's not right. They didn't left to the isolation. So we can say it is false. So statement 1 is true, whereas statement second is false. So right option is B. Statement 1 is true and second is false. Okay. So for the 10th question, right option is B. Thank you everyone. Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे, जिसको आप इसी आईडी पर लॉगिन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this session, we are going to discuss the solutions of logical reasoning section of your Matrix Olympiad exam that is held on 12th of October 2025. So let's start this session. So आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पेपर के अंदर था, उसको वो किस पे बेस्ड था, एक पैसेज बेस्ड था। जैसे कि आपने प्रिपरेशन जब की होगी लॉजिकल रीजनिंग की तो आपने समझा होगा कि इन पैसेजेस को सोल्व करने के लिए इनको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। जब आप इन पैसेजेस को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्रॉपर्ली प्रीमाइसेस को डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं, कंक्लूजन्स कैसे निकाले जा सकते हैं, इन्फ्रेंसेस कैसे निकाली जा सकती हैं, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग के कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। उस तरीके से जब आपने इन पैसेजेस को सोल्व किया होगा तो आपको पता लगता है कि बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स की तरफ बढ़ पाते हैं। अब ये जो पैसेज आपने रीड किया होगा इसके सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसेज किसके बारे में था, आपने देखा होगा कि मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी किसके को कि हमको क्या कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटरी कर देना चाहिए किसको, ड्यूटी टू लाफ। हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि उसे हंसना चाहिए। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो काफी बार फन वे के अंदर बनाए जाते हैं, कार्टून्स बनाए जाते हैं, मजाक के पर्पज से बनाए जाते हैं, बट काफी सारी भावनाएं आहत हो जाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और उस कंट्रोवर्सी से क्या होता है, बहुत सारे जो क्रिएटिव लोग होते हैं कहीं ना कहीं ओनली बिकॉज दे वर फनी, उसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आते हैं एनीथिंग बट फनी, वो सिर्फ फनी थे, सिर्फ इस वजह से क्या हो गया, वो लोग क्या करते हैं बेटा, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका कंप्लीट ये पैसेज था। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है देखिए, What is the central idea in the passage conveyed by the author? कि सेंट्रल आइडिया क्या था। तो अगर मैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूं, पीपल नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स सेंसिबिलिटीज, लोगों को दूसरों की सेंसिबिलिटीज को समझना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे सर बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैच मैं करना चाहूँ, कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं करूंगा, बट सेंसिबिलिटीज की बात की गई थी क्या, किसकी बात की गई थी, जो आपके सोशल मीडिया पे ह्यूमर जो है उसकी बात की जा रही है। ऑफन टेकिंग ट्राइब जैसे वर्ड्स को यूज किया गया है, इडियोसी एंड अब्सर्डिटी की बात की गई है कि काफी बार हम बहुत ज्यादा चीजों से आहत हो जाते हैं जिनके ऊपर हमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। सेंसिबिलिटीज के लिए सेंट्रल थीम की बात करनी है ना, सेंट्रल आइडिया डिस्कशन जरूर हुआ है, ठीक है, बट सेंट्रल आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमर इज ऑफन यूज एज ए गाब टू ऑफेंड अदर्स, ह्यूमर का यूज किया जाता है दूसरों को आहत पहुंचाने के लिए, भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए, उनको क्रोधित करने के लिए, खराब करने के लिए।
बुरा फील करवाने के लिए। क्या ऐसा कुछ डिस्कस किया गया? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आप क्या कर दोगे, इसमें एलिमिनेट कर दोगे। अब ऑप्शन नंबर डी भी आप डिस्कस कर लो, जुडिशरी शुड यूज ह्यूमर टू मेक जजमेंट्स अंडरस्टैंडेबल टू ले पर्सन्स। जुडिशरी जो है उसे भी क्या करना चाहिए, ह्यूमर का यूज करना चाहिए। अब आप इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आप क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को लगेगा कि ऐसा कुछ डिस्कस किया गया है, बट बात यह है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल आइडिया की तरफ क्या नहीं करता, हमें लेकर नहीं जाता है और एक डिस्ट्रैक्टर की तरह काम करता है। जो ऑप्शन बहुत ही ज्यादा गलत है उस ऑप्शन की तरफ हमें लेके जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, देयर इज एन अनवेलकम डिक्रीज इन पीपल्स सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा इसके अंदर, करेक्ट रहेगा कि जो लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसको एक्सेप्ट करने के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिक्रीज आ रहा है, लोग मजाक को सहन नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, सोशल मीडिया ऑफन पॉपुलराइज्ड इनसेंसिटिव एंड ऑफेंसिव पोस्ट। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया है किसको, ऑफेंसिव पोस्ट को और इनसेंसिटिव पोस्ट को। ठीक है, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? नहीं। इट शुड बी राइट ऑफ एवरी पर्सन टू पोक फन एट अदर्स। हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है दूसरे का मजाक उड़ाना। बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आर बाउंड टू बी ऑफेंसिव टू सम पर्संस। काफी बार कुछ क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत सारे लोगों को क्या कर देती है, ऑफेंड कर देती है। तो इसके साथ भी हम भी नहीं जाएंगे। एवरी ह्यूमरस एक्सप्रेशन शुड बी अंडरस्टूड रीजनेबली एंड रेशनली। पैसेज के अकॉर्डिंग, मैंने बताया क्रिटिकली चीजों को एनालाइज जब करेंगे तो आपको पता लगेगा ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट हियर कि हर ह्यूमरस एक्सप्रेशन को, हर मजाक को बहुत ही रेशनली समझना चाहिए, लॉजिकली समझना चाहिए। हर किसी के ऊपर ऑफेंड होना या किसी के ऊपर किसी को सहन नहीं करना, टॉलरेट नहीं करना एक समझदारी नहीं है। इट कैन बी योर इडियोसी एंड अब्सर्डिटी। ठीक है, बढ़ते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे। देखिए, पूछा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पिछले के अंदर क्या पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था क्या, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इस बार पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। काफी बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि सर सारी की सारी ट्रू तो है, सारी की सारी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शन नंबर ए है, ईच एक्सप्रेशन शुड बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। पैसेज में यही बोला गया है कि हर चीज को उसी तरीके से समझना चाहिए जिस तरीके से वो बात बोली गई है, जिस कंसेप्ट परसेप्शन के अकॉर्डिंग बोली गई है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोली गई है। पर बात है कि ट्रू तो है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, इसमें एलिमिनेट हो जाता है। फिर आप कहेंगे सर एक्सप्रेशन ऑफ होली काउ बियर्स डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। अब ये ट्रू स्टेटमेंट तो है, बट हमें क्या करना है, जो ट्रू नहीं है, क्योंकि होली काउ का यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। लीगल प्रोसेस कैन बी अब्यूज्ड इफ द अथॉरिटीज एक्ट ऑन देयर इरेशनल इंपल्सेस। अगर आप बिना समझे इलॉजिकली एक्शन लेना शुरू कर दोगे तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये चीजें सारी की सारी ऑप्शन नंबर ए सी डी ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज देयर। जैसे कि आपने इस पैसेज के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे टंग इन चिक वर्ड प्ले यूज किया गया है, कहीं ना कहीं मजाकिया तरीके से। कि हम लोग देखें क्या कहा गया है इसके अंदर, वाइल कैप्शनिंग फोटोग्राफ्स आफ्टर ए साइट सीइंग ट्रिप विद फैमिली। तो उन्होंने क्या बोला, ट्रिप टू सिरुमलई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। सिरुमलई के ऊपर वो घूमने जाते हैं, सिरुमलई, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, शूटिंग प्रैक्टिस की। पर आप इस चीज को समझ पाएंगे कि यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है। ये शूटिंग किसके लिए यूज नहीं किया गया, ये वॉर के लिए यूज नहीं किया गया है। ये किसके लिए यूज किया गया है, पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए, मूवीज फिल्म्स बनाने के लिए, वीडियोस क्रिएट करने के लिए। आई होप इज इट वेरी मच क्लियर टू यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 में क्या कहा गया है, सेम वो डिस्कशन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन रिड्यूस द इंक्रीजिंग इडियोसी एंड अब्सर्डिटी। क्या किया जा सकता है जिससे इस बढ़ते हुए तनाव और इस बढ़ते हुए जिस तरीके से इनसेंसिटिव नेचर जो है, इलॉजिकल जो एक्शंस लोग ले लेते हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो अपोलोजाइजिंग अपन हर्टिंग अनदर पर्सन सेंटिमेंट्स, अवॉइडिंग द यूज ऑफ कंट्रोवर्शियल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, using humor means to mitigate conflict।
ठीक है, मजाक को यूज करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, या फिर कंट्रोवर्शियल बातों को बोलने से बचना चाहिए, या फिर हमें दूसरों की सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट होता है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर आप सीधा इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको तीनों ही ऑप्शन सही लगेंगे। बट मैंने जैसे डिस्कस किया कि पैसेज को जब ध्यान से समझते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर एक बात का डिस्कशन किया गया था ऑप्शन नंबर डी को, कि क्या डिस्कशन किया गया था सर, कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि हमको समझना पड़ेगा, क्या उस रेशनल लाइन को हमें समझना पड़ेगा कि बीइंग फनी, मजाकिया होना और किसी के मजाक उड़ाने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। आपको जो परफेक्ट, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर फाइंड आउट करना है वो क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। Those who have been at the receiving end for their attempt at humor can draw strength from the ruling। जो वर्डिक्ट दी गई थी उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत खुशी मिली होगी जो क्या करते हैं, ह्यूमर क्रिएट करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी बात को फन वे के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बट देन अ क्रिएटिव प्रोसेस फेसिंग कॉम्पिटिटिव अपोजिशन, पर कुछ लोग जो बहुत क्रिएटिव है, जब उनको अपोजिशन देखने को मिलता है, उनकी निंदा देखने को जब उनको मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही क्या लगता होगा, डल फील होता होगा। ठीक है, जिससे उनको अपोजिशन क्यों फील कर रहा है, उनको क्यों बार बार उनकी निंदा की जा रही है, ओनली बिकॉज दे वर नथिंग बट फनी, दे वर एनीथिंग बट फनी। उनकी क्या गलती है कि वो सिर्फ क्या था, एक मजाक था, उन्होंने एक मजाक किया। तो इससे हमें क्या समझना है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फ्लिक्ट गो हैंड इन हैंड। क्रिएटिविटी और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साथ के साथ चलती है, बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन। क्रिएटिव फ्रीडम शुड नॉट बी कर्ब्ड अनरीजनेबली। Creative expressions are strengthened due to challenges faced by their authors. Creativity often leads to conflict। अगर मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट करूं तो डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्रिएटिविटी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लीड करती है क्या, हर बार, तो ये आपको पता लगेगा कि ये करेक्ट प्रॉपर जो आंसर है वो नहीं है। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आर स्ट्रेंथन्ड ड्यू टू चैलेंजेस फेस्ड बाय देयर ऑथर्स, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, क्रिएटिव फ्रीडम शुड नॉट बी कर्ब्ड अनरीजनेबली। कहीं ना कहीं किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को बिना सोचे समझे इलॉजिकल तरीके से क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, और उसको क्या नहीं करना चाहिए, कर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब उसको दबाना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहेगा। आई होप इस पैसेज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपर आंसर्स आपको मिल चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे बुक है वो थेसोरस से रिलेटेड है, बट आपको इधर समझना है ये जो वर्ड है थेसोरस, थेसोरस किससे रिलेटेड है बेटा, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। थेसोरस एक काइंड ऑफ अ बुक है, ठीक है। इन द सेम वे आपको पता लगेगा ऑप्शन नंबर ए गलत है। फॉरेस्ट, ट्री, वुड, फर्नीचर, बॉल, टेनिस, all the options are wrong and the correct option according to this similarity will be option number B, क्योंकि एक पाइथन क्या होता है, एक रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। जैसे थेसोरस एक बुक की कैटेगरी में आता है, वैसे ही पाइथन किसकी कैटेगरी में आता है, रेप्टाइल्स की कैटेगरीज में आता है। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, इसके अंदर करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको एक नंबर दिया गया है, देखिएगा 4 इज रिलेटेड टू 32। इनमें से कौन सा वर्ड जो, कौन सा ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं सेम पैटर्न को फॉलो करता है। देखिए क्या है इसके अंदर, 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो आपको क्या आंसर मिलता है, 64। एंड इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 2 इट विल बी द 32। अब आपको आंसर मिल चुका होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी आपका है 6 and 108, if I do the cube of 6 you will get the 216, and if I divide this number 216 by 2 you will get your answer, that is 108. So 6 and 108 are relatable in that thing. First of all you just have to find out the cube of this number and then divide that result by 2 and you will get your answer. So option number D will be the correct answer, option number D. नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, देखिए एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया हुआ है सेम। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सही तरीका कि सबसे पहले आप क्या करें, सिर्फ फर्स्ट लेटर को उठाएं। जैसे कि बी आपके सामने है और बी के सामने क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। अगर आप इस
पैटर्न को समझ पाए थोड़ा सा और, ई दिया गया है और ई के आगे क्या दिया गया है, वी दिया गया है, सी के आगे क्या दिया गया है गाइस, एक्स दिया गया है और डी के आगे W दिया गया है। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं उनके अपोजिट जो नंबर्स हैं उनको यूज किया गया है। अगर B आपका 2 पर आता है तो इन द सेम वे Y भी 2 पर आता है, बट कहां से, जब हम Z से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अपोजिट जो दिया गया है वो दिया गया है कि B जैसे 2 पे आता है, Y भी 2 आता है, बट बोथ आर इन द फ्रॉम द व्हेन आई टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द Z। तो उल्टी जो काउंटिंग में शुरू करता हूं तब B बिल्कुल उसके क्या आता है, अपोजिट आता है। E किसके अपोजिट आता है, V के अपोजिट आता है। तो बहुत आसान आपको लगा होगा आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। मुझे सेम D की जो है उसके अपोजिट को फाइंड आउट करना है। D का अपोजिट क्या रहेगा आपका, D के अपोजिट क्या होता है, W होता है। क्या होता है, W। अब आप देखेंगे सर 2 ऑप्शन में W दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद G के अपोजिट में क्या दिया गया है, G के अपोजिट में क्या होता है बताइए आप, G के अपोजिट में होता है T। क्या होता है, T। अब आप मुझे बताइए कि आंसर आपको मिल चुका है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसके अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, WTVU, DGEF। D के अपोजिट क्या होता है, W। G के अपोजिट T, E के अपोजिट V और F के अपोजिट आपका U आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। DIG का कहीं ना कहीं इज इक्वल टू 29 किया गया है, 25 किया गया है। क्या किया गया है, 25 किया गया है। तो आप कैसे किया गया, ध्यान से समझना। D की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं यहाँ पे, 4 4th नंबर के ऊपर। आई कैन पुट I ऑन 9, G 7 alphabetically na, A41, B42 in the same way, G4. If I do add these numbers I will get 20. If I do plus 5 with this number, with this result, I will get the 25 number. ओके एक बार इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं, क्या इसके ऊपर भी यही होता है क्या। C का नंबर कितना है 3, U का 21 and T का 20 जाता है आपका। If I do add all these numbers, what will you get, you will get 44. If I do add 5 with 44, क्या आंसर आएगा आपका 49। देखिए यहाँ पे 49 है। तो मुझे फाइंड आउट करना है किक का क्या होगा, किसका, किक का क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, वही सेम K4 11, I किसके पे जाएगा आपका 9 पे जाएगा, फिर C कितने पे जाता है 3 पे, और K किसके ऊपर जाएगा आपका फिर से 11 पर। इनको अगर मैं जब ऐड करूंगा तो आपको पता लगेगा कितना ऐड होगा आपका 34। अगर मैं इन सभी को प्लस कर दूं तो क्या आंसर आएगा आपका 34, और जब 34 प्लस 5 में करूंगा तो क्या मिलेगा आपको 39। क्या हमारे पास ऑप्शन में 39 है, बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा। आई होप इज इट वेरी मच क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए क्या दिया गया है, विक्ट्री इज रिलेटेड टू, विक्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड आपका, विक्ट्री को मैं कर देता हूं सबसे पहले, लिख देता हूं आपके सामने। उसके बाद में CIVSYRO, इससे रिलेटेड आपका ये है। देखते ही आपको समझ आया होगा इसने क्या किया है सर। सबसे पहले C को लिख दिया, फिर I को, फिर V को आपने लिख दिया, ठीक है, CIV। फिर इसने इसको क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले YRO आपने लिख दिया, और T और S का क्या रिलेशन आपको पता लगेगा -1 का। किसका है, T आता है आपका 20 के ऊपर और S आपका आता है कितने के ऊपर 19 के ऊपर आता है, और 20 - 1 19 होता है। तो ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, ट्रेटर लिखता हूं। मैंने क्या लिखा, ट्रेटर, TRAITOR। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले इसको लिख देता हूं ART, लिख दूं क्या ART। उसके बाद क्या करना है सर, मुझे ROT लिख देता हूं ROT। I से -1 जब करूंगा तो कौन सा लेटर आता है, I से पहले कौन सा लेटर आता है, H आता है। कौन सा आता है, H। क्या ARTHROT ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर C नहीं, ऑप्शन नंबर D आपका क्या रहेगा इसमें
करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा इसके अंदर? करेक्ट रहेगा। ARTHROT। आई होप ऑल दीज सॉल्यूशंस आर वेरी मच क्लियर टू यू। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to discuss the solutions of your business current affairs of your Matrix Olympiad exam that is held on 12th of October 2025. So let's start this session. So the first question that goes on your screen is 21st question of our business current affairs part. What denomination of currency note will RBI soon issue under the Mahatma Gandhi new series? RBI कौन से denomination के नोट जो है वो अब शुरू करने वाला है under the Mahatma Gandhi new series? So the option number 20 will be the correct answer here. जो 20 रुपए की जो नोट है उसके जो RBI है वो करेंसी को अभी क्या करने जा रही है? इशू करने जा रही है. So the option number A would be the correct answer here. Rupees 20 would be the correct answer here. Rupees 20 would be the correct answer here. बढ़ते हैं आगे. Question number 22. Which caves motif will be retained in the new 20 rupee notes? Which caves? So the option number C would be the correct answer here. Ellora caves would be the correct answer here. Ellora caves. Question number 23rd. How much did foreign portfolio investors inject into Indian equities in May 2025? Equities कितना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, FPIs ने पैसा डाला है किसके अंदर? इंडियन इक्विटीज के अंदर मई 2025 में, बताइए. सो द ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. 4,452 करोड़ रुपीस. हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24th. Why was the license of HCBL Cooperative Bank cancelled by the RBI? What was the reason behind the cancelling of a license of Cooperative Bank by RBI? So option number B would be the correct answer here. Due to the low capital and earning standards, their license was cancelled. Option number B would be the correct answer here. So the question number 25th goes as, what percentage of depositors in the cancelled bank were insured up to rupees 5 lakh? Option number C would be the correct answer here. 98% depositors in the cancelled bank were insured up to rupees 5 lakh. Option number C would be the correct answer here. Question number 26th goes as, India's core sector growth for April 2025 was? What was the core sector growth? So the option number C would be the correct answer here. 0.5%. 0.5%. Question number 27th goes as, what percentage does the index of core industries ICI constitute of the IIP? Option number C would be the correct answer here. 40.27% would be the correct answer here. Question number 28th. Which department launched the financial fraud risk indicator? Which department? The Department of Telecommunication. Department of Telecommunication would be the correct answer here. Option number C. Question number 29th. In fiscal year 2024-25, how much did RBI sell in foreign exchange to defend the rupee? So the option number B would be the correct answer here. 398 approx billion dollars were sold by RBI in foreign exchange to defend the rupee. Option number B would be the correct answer here. Question number 30, last question of our session of business current affair. What was the highest ever surplus transfer made by RBI to the central government in fiscal year 2024-25? So the option number C would be the correct answer here. 2.68 lakh crore. 2.68 lakh crore would be the correct answer here. I hope you got all the solutions of business current affair. Your exam was amazing. So with this, we would like to complete this session here of business current affair. Thank you. Best wishes. Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today in this session, we are going to discuss the solutions of reading comprehension part of your Matrix Olympiad exam that is held on 12th of October 2025. So let's start this session with the same enthusiasm and energy. तो देखिए, सबसे पहले आपके एक पैसेज दिया गया है. इट इज अबाउट रिया शर्मा हु इज अ यंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पुणे हु इज लॉन्च्ड हर स्टार्टअप इकोबैग्स. आई होप कि आपने इस पैसेज को रीड आउट किया होगा एंड आफ्टर रीडिंग आउट द पैसेज आपको जो सॉल्यूशंस है वो बहुत अच्छे से आपने इसके अटेम्प्ट किए होंगे. इनके जो सही क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा पैसेज को समझते हैं, उसके बाद जल्दी से जल्दी इनके आंसर्स को सोल्व करते हैं.
देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पैसेज के बारे में. इट इज अबाउट रिया शर्मा. शी हैज स्टार्टेड अ स्टार्टअप कोल्ड इकोबैक्स. इकोबैक्स का एक स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पर इन 2020 में इसको शुरू किया. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस स्टार्टअप? सो ये समझना जरूरी है यहाँ पे. टू रिड्यूस द प्लास्टिक, कहीं ना कहीं प्लास्टिक को कम करने के लिए, और इको फ्रेंडली बैग्स प्रोवाइड करती है ये कंपनी फ्रॉम रिसाइकल्ड क्लॉथ. इनिशियली शुरुआत के अंदर रिया को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली. लाइक शी फेस्ड मेनी चैलेंजेस. एंड व्हाट वर दोस चैलेंजेस, ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए. लिमिटेड फंडिंग वाज देयर, फंडिंग बहुत ही कम मिली इनको. लैक ऑफ अवेयरनेस वाज देयर, कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं थी बिजनेस के बारे में इतनी. स्मॉल कस्टमर बेस, शुरू के अंदर कस्टमर्स जो है उनके साथ भी इतना कनेक्ट नहीं कर पाई रिया. However, her strong marketing strategies focus on quality and word of mouth. But इनकी जो strong marketing strategies थी, and what were those strong marketing strategies? Word of mouth and focus on the quality of product. कहीं ना कहीं इकोबैग्स की जो स्टार्टअप को भाई बहुत ही अच्छा एक बूम दिलवा पाती है और पॉपुलैरिटी दिलवा पाती है. तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बढ़ते हैं आगे. रिया पिच्ड हर आइडिया ऑन ए टेलीविजन शो. कहीं ना कहीं अपने आइडिया को एक शो के अंदर भी प्रेजेंट किया, जहां से इनको एक इन्वेस्टमेंट मिलती है, एक इन्वेस्टर इनको मिलते हैं हु ऑफर्ड 50 लाख फॉर ए 20% स्टेक इन इकोबैग्स. कहीं ना कहीं 20% स्टेक के लिए इनको 50 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिलती है. ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस इन्वेस्टमेंट अलाउड हर टू एक्सपेंड ऑपरेशन. अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ काम आएगी? टू एक्सपेंड हर ऑपरेशंस, हायर स्किल्ड वर्कर्स एंड लॉन्च एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर ये पैसा जो है वो यूज करेंगे. अब बाई 2023 सिर्फ 3 साल के अंदर इकोबैग जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है. कहीं ना कहीं ऐसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इनकी बढ़ चुकी है. सप्लाई चेन में बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट ये कंपनी शुरू कर देती है. रिया का मानना है कि जो पैशन है और जो इनोवेशन है और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, वही एक फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस के कोई भी बिजनेस जो है उसके फाउंडेशन के अंदर काम करता है, उसके सक्सेस के अंदर काम करता है. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि रिया नाम की एक बच्ची है, रिया शर्मा, जिन्होंने इकोबैग्स नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया 2020 के अंदर. रिड्यूस, उसका मेन एम क्या था? प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम करना. आफ्टर दैट स्टार्टिंग के अंदर कुछ चैलेंजेस आपको दिखाए गए यहाँ पे, जैसे कि लिमिटेड फंडिंग बहुत कम थी, अवेयरनेस नहीं थी, स्मॉल कस्टमर बेस था. उसके बाद में व्हाट वर हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑल्सो, उसके उनके कौन सी स्ट्रेटेजीज कौन सी उनके पास जो थी वो उनकी हेल्पफुल रहती है, उसके बारे में डिस्कस किया गया. आफ्टर दैट इन्वेस्टर इनको मिलता है 50 लाख फॉर 20% स्टेक. आफ्टर दैट 2023 के अंदर कैसे कितना बिजनेस ग्रो कर पाता है, एंड व्हाट आर द व्यूज ऑफ रिया अकॉर्डिंग टू हर, इन हर ओपिनियन, लाइक व्हाट शुड बी द फाउंडेशन ऑफ अ गुड बिजनेस सक्सेस. पैशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर देयर. सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर. आई होप आपको पैसेज जो है वो क्लियर हुआ होगा. देखिए क्वेश्चन 31 क्या कहता है? What was the main objective of रिया शर्मा स्टार्टअप इकोबैग्स? रिया शर्मा का जो स्टार्टअप है इकोबैग्स, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज थ्रू द इको फ्रेंडली बैग्स. ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 32. What problem did रिया नॉट फेस इनिशियली इन हर बिजनेस? कौन सी प्रॉब्लम जो है वो रिया ने शुरुआत के अंदर फेस नहीं की? Difficulty. Option number C would be the correct answer here. Difficulty in finding raw materials. Question number 33. How did investor support ecobags? Investor ने कैसे सपोर्ट किया रिया को? जैसे कि आपने देखा 50 lakh for a 20% stake. Investment was there. So option number B would be the correct answer here. Bought 20% ownership for rupees 50 lakh. Question number 34th. What helped ecobags become popular among urban customers? ecobags कैसे पॉपुलर हुए? कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा, what were the strong marketing strategies? Word of mouth was one of them, and quality focused. Option number A would be the correct answer here. Question number 35. Why do you think the investor was willing to invest rupees 50 lakh in Riya's startup despite it being a small and new? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्वेस्टर ने रिया के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्यों किया होगा? So the company had already earned huge profits. नहीं, ऐसा नहीं था. The investor was close friend of रिया. नहीं, बिल्कुल नहीं. टेलीविजन शो के किसी के अंदर रिया ने अपने
स्टार्टअप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया था। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर है। इन्वेस्टर्स सो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन रियाज विजन, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को दिखाई दिया कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है और रिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही पैशनेट गर्ल है जो इस बिजनेस को ग्रो कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप इस पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने सोल्व कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर एक नई पैसेज के साथ। इट इज अबाउट डिजिटल बैंकिंग। With the increasing use of smartphones and interconnectivity, digital banking has become a key part of India's financial landscape. आपको पता लगा होगा कि पैसेज किसके बारे में है। इट इज़ अबाउट डिजिटल बैंकिंग। आजकल जो बैंक्स हैं वो काफ़ी तरह की ऐप्स आपको ऑफर करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सर्विसेज है, जिससे जो कस्टमर है वो घर बैठे बहुत तरह के सर्विसेज को क्या कर सकता है, उनका फ़ायदा जो है उसको उठा सकता है। जैसे कि आपको बैलेंस चेक करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, और बल्कि आप लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इवन विजिटिंग अ ब्रांच। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग। आगे देखिए क्या कहता है, आरबीआई हैज़ एनकरेज डिजिटल इनोवेशन। आरबीआई ने कहीं ना कहीं कैसे इसको एनकरेजमेंट अपनी शो की है। आरबीआई ने कुछ डिजिटल ओनली बैंक्स को अलाउ किया है और कुछ सर्विसेज भी लॉन्च की है, जैसे कि ई रूपी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रहना चाहिए, प्लस डिजिटल रूपी को भी इन्होंने लॉन्च किया है। दीज स्टेप्स एम टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए है, स्पेशली कौन से, जो गांव के जो रूरल एरियाज जो हैं उन एरियाज के अंदर इसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, जहां पर फिजिकल बैंक्स जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर जहां जिस एरिया में बैंक्स नहीं है वो लोग भी अपने घर पे रह के क्या कर पाए, बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा पाए। However, with convenience comes responsibility। कन्वीनियंस के साथ में आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, आप अकाउंटेबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसकी वजह से जो डिजिटल बैंकिंग है उसके अंदर देखिए उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल बैंकिंग जब आई है, कोई भी नया इनोवेशन आता है, कोई भी नया स्टार्टअप, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। वैसे डिजिटल बैंकिंग के भी कुछ नेगेटिव्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ी वैसे ही साइबर फ्रॉड्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आरबीआई और बैंक्स आपको बार बार मैसेज कन्वे करते हैं कि आप किसी के साथ भी ओटीपीज शेयर ना करें। आस्किंग कस्टमर्स नॉट टू शेयर ओटीपीज, पर्सनल बैंकिंग डिटेल, अपनी बैंकिंग डिटेल किसी से भी आप शेयर ना करें। कोई भी बैंक का कर्मचारी कभी भी आपको फोन करके आपका ओटीपी या पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स आपसे नहीं मांगेगा। टू यूज सिक्योर नेटवर्क्स, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल बैंकिंग मार्केट। ये पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस पैसेज के अकॉर्डिंग कि भारत जो है वो 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग मार्केट बनने जा रहा है। जैसे कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैशलेस और पेपरलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और गोल जो है वो क्या, व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ दिस इज अबाउट मेकिंग द बैंकिंग फास्टर, सेफर एंड मोर एक्सेसिबल टू ऑल। आई होप कि पैसेज आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी आसान पैसेज था और इसी आसान पैसेज के क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग मेंशन्ड इन द पैसेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो कौन सा इस पैसेज के अंदर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं आप बिना किसी ब्रांच में विजिट किए उनका एक्सेस पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कहता है व्हाट इज द डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी क्या है? आरबीआई डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए ई रूपी और डिजिटल रूपी की जो बात की गई थी, जो आरबीआई ने क्या किया था, डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ हैज द आरबीआई सपोर्टेड डिजिटल बैंकिंग। आरबीआई ने कैसे सपोर्ट किया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, बाय इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल ओनली सर्विसेज लाइक ई रूपी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द कंसर्न रिलेटेड टू डिजिटल बैंकिंग एज पर द पैसेज। कौन से कंसर्न्स जो है वो डिजिटल बैंकिंग के साथ में राइज हो जाते हैं। जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ती है वैसे बहुत तरह के कंसर्न्स भी है वो गवर्नमेंट के लिए बढ़ रहे हैं। फॉर जो आपको यहाँ पे पैसेज में मेंशन किया था, साइबर फ्रॉड वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, साइबर फ्रॉड। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, साइबर फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ ओटीपीज। बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं वो आपसे फ़ोन करके, आप देखते हैं मूवीज़ में आपने देखा होगा और आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि बहुत तरह के ओटीपीज हैं। आजकल तो लिंक्स की बात की जाती है कि कोई भी तरह की पर्सनल बैंकिंग डिटेल अगर आपसे पूछी जाती है तो उसको आप शेयर ना करें स्कैम्स से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम बढ़ेंगे, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक फॉर डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल बैंकिंग मार्केट बाय 2030। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। इंडिया विल लीड ग्लोबली इन डिजिटल बैंकिंग बाय 2030। 2030 तक इंडिया कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे, आप कह सकते हैं, लार्जेस्ट मार्केट की तरफ बढ़ रहा है डिजिटलाइजेशन के अंदर, डिजिटल बैंकिंग के अंदर, ऑफ कोर्स। सो आई होप ये सारे आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर एंड द आंसर्स वर रियली इजी। पैसेजेस बहुत आसान लगे होंगे आपको पढ़ने के बाद। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello everyone, welcome to Matrix YouTube channel. If any student have any type of query or doubt in the answer key provided to you for Matrix Olympiad paper solutions, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसको जो आंसर की मैट्रिक्स ओलंपियाड पेपर की दी गई है या वीडियो सॉल्यूशंस में उसको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो इस स्थिति में आप अपनी क्वेरी को कुछ इस तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज आस्क ओलंपियाड डाउट्स। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इधर ऑप्शन में एग्जाम नेम रहेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चंस लिखा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे विद द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन की आंसर की में या आंसर पे डाउट है, आपको क्वेरी रेज करनी है, तो आप यहाँ पर राइट साइड में आस्क का डाउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ पर आप जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट क्वेश्चन करेंगे ये क्वेरी हम तक पहुँच जाएगी, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स बहुत जल्द आप तक पहुँचा देंगे, जिसको आप इसी ID पर लॉगिन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, how are you? I think you have done well in Commerce Matrix Olympiad. Today I am here to provide the solution of a Commerce Matrix Olympiad Part 5th Accountancy. Anticipate no profit but provide for all losses. It refers to which principle? As you know, there are the different principles of accountancy. So in this particular question, we have to find out the principle which identifies that anticipate no profit but provide for all possible losses. If I start with the consistency first, as per consistency, it says that same accounting policies and the procedure should be followed from the year to year. And matching, it says that the income of a particular year should be matched with the expenses of that particular year. But if I talk about conservatism, it says that we have to anticipate no profit, but we have to make preparation for the possible losses. So C is the right option in case of question number 41. Question number 42, a company reported a contingent liability in a notes to accounts rather than the main balance sheet. This practice is based on which accounting principle? In this we have to find out which accounting principle. It states that contingent liability has to be provided in the notes of to account. Let's discuss the various options. Full disclosure. Full disclosure, it principle says that we have to provide the true and fair view about financial statements to the various stakeholders, as well as it also says that while disclosing the information, we have to provide information about contingent liability, not in the balance sheet but in the notes to accounts. So here the A part is the right option, whereas the prudence, it says about, it is a conservatism concept which says that we have to anticipate no profit but provide for all losses. Cost concept, it says that asset should be recorded at the price which is pays to acquire it. And the accrual concept says that the expenses and the income should be recorded when these are matured and incurred rather than these are paid or received. So answer A is the right option for question number 42. Now let's move to the question number 43. Which qualitative characteristics is affected if the firm changes its methods of depreciation every year? So we have to talk about the qualitative characteristics if the firm changes its methods. So
First option is reliability. Second is consistency. Yes, consistency, it says that the same accounting policies and the procedure should be followed from the time to time so that we can compare one year with the another year. So the right option is B. Whereas the reliability, it says that the accounting information is true, that the person can rely on it. Whereas relevance, it says that the information should be relevant as well as it should be available in time. Whereas the materiality concept, it says that the important information should be recorded, important and relevant information should be recorded, unimportant material information should be ignored. So, for 43, the right option is B. Question number 44. Purchased an old machinery. We purchased the old machinery for rupees 50,000 and we spent 2,000 on its carriage and rupees 10,000 on its immediate repair. Machinery account will be debited. Here we have to find out the amount, by which amount the machinery account should be debited. Everybody knows that as per the cost concept, whenever the asset is purchased, it should be recorded at the price which is paid to acquire it, that is 50,000 rupees. It also includes the expenses like the carriage and the immediate repair expenses so that they bring that asset into running condition. So, in 50,000 will be include 2,000, then also include 10,000. So, the answer here is 62,000. So, the right answer is 62,000 in this case. So, machinery account should be debited with the amount 62,000. C is the right option for question number 44. Now come to the question number 45. As per this question, bank charges of rupees 200 were debited by the bank but not recorded in the cash book. In the bank reconciliation statement, BRS means bank reconciliation statement. As you all know that in case of the bank reconciliation statement, we have to compare the passbook with the cash book. So let's move back to the situation. Bank charges of 200 were debited by the bank. It means the passbook decreases because it has paid 200 rupees. But we haven't recorded in the cash book. It means cash book shows greater balance as compared to the passbook. But as per the bank reconciliation statement, we have to reconcile the passbook balance with the cash book. So what we have to do? We have to decrease the cash book balance so as to bring it equal to the passbook balance. So the right option is added to the passbook balance. No. Subtracted from the cash book balance. Right, it's right. We have to subtract it from the cash book balance so that the cash book balance can become equal to the passbook balance. So in case of question number 45, right option is B. Next question is 46 question. A debtor pays rupees 5,000 in cash. What is the correct entry? Means what is the correct journal entry? This is a transaction. A debtor pay rupees 5,000 in cash. It means when the debtor pays, two accounts are opened in this particular entry. One is the cash account and other is the debtor account. As everybody know that cash is a real account and the debtor is a personal account. So when he pays the cash, debtor he pays the cash, obviously the cash will come in. So rule for the real is debit what comes in. So we will say that the cash account is debited and who is the giver? Debtor is the giver. So rule for the personal account is debit the receiver, credit the giver. In this case, the debtor is giver. So we will write here debtor account by the amount 5,000 and 5,000. So we can say cash account is debited and debtor account is credited. Let's see the option. Debit debtor, credit cash. No. Debit cash, credit debtor. Yes, right. Debit sales. There is nothing related to the sales.
And same in the next situation also, debit debtors, credit sales. Nothing is related to the sales. So the right option for question number 46 is B. Question number 47. Now let's have a look at the question number 47. A check issued was recorded. A check was issued. A check issued was recorded in the cash book but never given to the party in BRS, means bank reconciliation statement. Again, as you know that in case of the bank reconciliation statement, we have to compare the passbook balance with the cash book balance. So let's come to the transaction again. A check is issued. When the check is issued, we know the cash book decreases, cash book's balance decreases, whereas the balance of the passbook is more as compared to the balance of the cash book, because it is never given to the party. Okay, it is not given. So when the passbook is more, so what we have to do? We have to reconcile cash book and the passbook. So what we will do? We will increase the cash book balance, that is add it to the cash book balance, right? So because the passbook is more as compared to cash book, so we have to reconcile, so we have to add it to the cash book balance. So in case of question number 47, the right option is B. Next question, question number 48. Overdraft as per cash book balance is rupees 10,000. Here the overdraft is given, it's rupees 10,000. Check deposited but not credit rupees 2,500. Check issued but not in cash rupees 3,500. What is the balance as per passbook? Again, we are going to have the question related to the bank reconciliation statement. That is, we have to look into account. You know, when we have to make the bank reconciliation statement, we have to write the plus items as well as we have to write the minus item. Now, let's start the question. Overdraft as per cash book. Whenever there is an overdraft cash book, you know, it indicates the minus sign. That is, we will write minus 10,000. In minus, we will write 10,000. Check deposited but not credited. See the comparison, that is passbook and cash book. When the check is deposited, so the cash book balance increases but the passbook balance is less. So what we have to do? We have to decrease it. So we have to decrease it by 2,500. Next, check issued. When the check is issued, in the second situation again, come to the passbook and the cash book. In the second situation, check issued. When the check is issued, cash book balance decreases, but the passbook balance is more. So again we have to add. So we have to add amount 3,500. So come to the conclusion, 12,500. It's only 3,500. So it means the difference is 9,000. So we can say the balance as per passbook. This is the balance as per passbook. So this is 9,000. We can say this is an overdraft balance as per passbook. So the answer is B. So in this case, the right answer is B. That is overdraft as per passbook, rupees 9,000. Question number 49. Yes, next. If goods worth rupees 2,000 returned by a customer, it is recorded in. When the goods of rupees 2,000 were returned by the customer, it is recorded in as the customer returns the good. So we can say it is sales return. So in case of the sale return, obviously sale return will be written in the sales return book, because in the sales book we will write the credit sale of the goods. In the purchase return book, we will write the return of credit purchase of goods. And in the journal proper, we will write those things which doesn't find place in any of the above book. So the right option 49 is C. That is sales return book. Come to the question number 50. 50 question number. Which of the following transaction is recorded in the purchases book? Now we have to find out of these 4 transactions, which transaction should be recorded in the purchases book. First is purchase of furniture for office use, purchase of goods on credit, purchase of goods for the cash, all of the above. No. As you know that the purchase of the goods on credit should be written in the purchase book.
Whereas the purchase of the goods for the cash, it would be written in the cash book. So only the purchase of the goods on credit, when we are going to purchase the goods on credit, then it will be written in the purchases book. So the right option for the question number 50 is B. Okay. Match the column 1 with column 2 and select the correct answers using the codes given below. Column 1, going concern concept, money measurement concept, cost concept, and the other is dual aspect concept. Okay. So see, where options we can write over there? P, Q, R, S. Now see, going concern concept, let's have a look at the options in the column 2. Transactions are recorded at cost. Business will continue in future. Only wherever items are recorded. Every transaction has 2 accounts. Yes. Now come going concern concept. What the going concern concept says? That the business will continue in the future. So 2. Going concern concepts it say that the business will continue for an indefinite long period of time. Come to the money measurement concepts, it says that only measurable items are recorded. Then in accounting, only those items should be recorded which can be expressed in terms of money. So for this, the option is 3. Now come to the cost concept. Cost concept, it says that only the transaction should be recorded at the cost which is paid to acquire it. So it's 1. S, dual aspect concept. Dual means double. It says that every transaction affects 2 accounts. So it's 4. So the right option is 2, 3, 1, 4. So we can say option D is the right answer in case of question number 51. Come to the question number 52. So here we have to match the column A. We have to match the column 1 with the column 2. Let's have the look at the different options of column 1. One is the opening entry, rectifying entry, compound entry, and the journal proper. See the options in the column 2. More than 2 accounts are involved. Record transactions not covered. Entry record assets and liabilities at the beginning. Used to correct an error in accounting. So these are the different options of the column 1 and the column 2. Let's match column 1 with column 2. Yes. Opening entry. Opening entry, it says it refers to the entry which is to record assets and liabilities at the beginning. So we can say here that P refers to 3. P matches with the third. Rectifying means to correct. So rectifying entry, it says that it corrects an error in accounting. It's 4. What's the compound entry? Compound entry, it says that more than 2 accounts involved. For R, it is 1. For S, what the journal proper says, that is record the transactions not covered anywhere. So this is the right option, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, that is C. So we can say that for question number 52, the right option is C. Next question is question number 53. Yes. Again, this is the question with the different options, like we have to match column number 1 with column number 2. Okay, let's start. Column number 1, that is match column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below. First is purchase book, then is sales book, then is cash book, then is purchase return book. Yes. Now column 2, this is the goods returned to supplier, then is the credit purchase of goods, then is the credit sale of goods, then is all cash transaction. Now let's match column 1 with column 2, P, Q, R, S. Yes. P, purchase book. Actually, purchase book records the transactions which related to the credit purchase of goods.
So the option is 2. Purchase book. In purchase book, we will record only those transactions which are related to credit purchase of goods. So option is 2. In case of the sales book, we have record only transactions which are related to credit sale of goods. That is option 3. In case of cash book, only cash transactions are recorded. 4. In case of purchase return, we have to write the return of the goods by the supplier. So it's 1. Yes. Now have a look at the options. 2, 3, 4, 1. Yes, it's the D. So right answer for question number 53 is option D. Yes. Next is 54. Arrange the following steps in correct sequence. This question is related to the sequence. We have to form a correct sequence, that is which statement will come first, second, third and fourth. For recording a credit purchase, this sequence tells us about what is the method, what is the procedure we have to follow for the credit purchase of goods. That is credit purchase of goods. Yes, see the different options. Post individual suppliers amount to their ledger account. Total the purchase book. Post the transactions to the purchase book. Identify that the transaction is a credit purchase of goods. So the correct sequence is, first is we have to first identify, that is the credit purchase of the goods, we have to identify it. That is the credit purchase. Then after that we will write the transactions in the purchase book. We can say we post the transactions to the purchase book, then we will total the purchase book. Yes, that is option number 2. Then we will total it. Then last, what we have to do, we have post the individual supplier account to the ledger account, then we will shift it to the ledger account. So this is the correct sequence. 4, 3, 2, 1. Let's see. Yes. So D is the correct sequence. Means first we will identify the transactions, whether a transaction is a credit purchase of goods or you can say cash purchase of goods. Then we will post the transaction. We will post these transactions in the purchase book. Then we will total that purchase book. After posting, we will total the purchase book. Then at the last, after that, we will post the individual supplier account to their particular ledger account. So this is the correct sequence, 4, 3, 2, 1. So in case question number 54, the correct option is D. Question number 55, let's see. Statement 1. So these questions, these are statement based questions in which two statements are given, statement 1 and statement 2, and you have to identify whether both the statements are true, both are false, or any one of them can be true or false. Let's see. Statement 1. Bank reconciliation statement is prepared only when there is an overdraft balance in the bank. No, it's wrong. It's not only prepared when there is an overdraft balance. So we can say this is false. Next, bank reconciliation statement help in locating errors and omissions in both cash book and passbook. Very well right. Because bank reconciliation statements, it find out the errors in the cash book and the passbook. Then what's the purpose of the bank reconciliation statement? To reconcile the errors between the cash book and passbook. Yes, it's very well right. So this is true. So we can say statement 1 is false and second is true. Statement 1 is false and second is true. So this is the right. So the right option is D for question number 55. Now move to the question number 56. This is also statement based questions. Statement 1. Statement 1. Under the accrual basis, revenue and expenses are recorded when they are earned or incurred. Yes, very well right. Accrual concept says that we have to write the expenses and the revenue only when they are earned or incurred rather than when they are paid or received. So this is true. Statement 2 says under the cash basis, this is about cash basis, it was about accrual basis. Cash basis, transactions are recorded only when money is received or paid. Yes, it's also very well right. So we can say this statement is also true.
both the statement 1 and the statement 2 are true. So we can say the right option is A. In case of question number 56, the right option is A, that is both the statements are true. Let's move to the next question. Question number 57. Yes. Again, this question is related to the same one. Two statements are given, statement 1 and 2, and you have to identify whether both are right. Right means true, false, or either of them are true or false. Let's see. Statement 1. Posting means recording transaction in the journal. No, it's wrong. Actually, posting means recording of transactions from the journal to ledger. Balancing a ledger. We are talking here about the ledger. Balancing a ledger account means finding the difference between debit and credit sides, right? Because ledger, it's find out what is the difference between the credit side and the debit side. That is, they find out the balance. So we can say this is true. First is false and second is true. First statement is false and second statement is true. So we can say B is the right option in case of question number 57. Now move to the question number 58. Again, these are the statement based questions in which two statements are given and you have to identify whether both are true, false, or either of them is true or false. Let's proceed. Statement 1. Purchase return book records good return to supplier which are purchased on credit. Very well, right, because purchase return, it only record the goods which we return to the supplier and the goods which are purchased on credit. So this option is true. Goods returned that were purchased for cash are also recorded in the purchase return book. No, because we discussed in the first statement that only those transactions are recorded which are credit, which are on credit, not cash. So this is false. In purchase return book, we will record only those transactions which are returned of the credit purchase of the goods, not of the cash. So we can say first is true and second is false. Yes, B. Statement 1 is true and statement 2 is false. So in case of 58, B is the right option. Moving further to next question. Question number 59. In this question, one statement is given and there are the 4 options for the same. Whether it is true, whether it is false, sometimes true can't be said. Let's go through the statement. Statement is, every transaction is first recorded in ledger and then in journal. No, it's wrong. Because first the transaction is recorded in journal. Then afterward it is recorded in ledger. So we can say this statement is false. So the right option is B. For question number 59, the right option is B. That's false. Now let's start with the question number 60. Direct deposit by customer into the bank account is already recorded in the cash book. No, this statement is not right. Because whenever the person deposit or a customer deposit any amount in the bank, it increases the passbook balance. But there is no effect in the cash book balance. So whenever the person deposit any customer any deposit any amount directly into the bank, it is recorded in the passbook, not in the cash book. So we can say this statement is false. So in case of the question number 60, the correct answer is B. Thank you everyone.